Hey guys, this is KJ and today I will be reviewing about a story or you can say web novel. Yeah, it's a web novel. So this is one of my favorite story, okay? Like right now I am still following it like daily and the part which I love the most is the male and female leads chemistry. They are like superb. The swag of female lead and her style of showing love and I just love her character. Like she's so cool, yeah. So it is already hyped up, okay? So don't expect much if you are not in this kind of stories. So I don't know you all will like it or not, but it's a good story with equally rich MC characters and with the fun element too. So already I had stated so many things about this story. So let's just read out the introduction of our story because from last minute I am just talking about story and not telling you of what I am talking about, okay? So the book name is Standing Next to You and it's a contemporary romance genre and a writer is Avalondra. So let's begin the intro. A man in his 30s was standing in front of She Devil's grave. Under everyone's watchful eye, he dropped the flower to her coffin. His tone was full of ridicule. Congrats on your death. Next year he came. I want you lost to me and I will leave well. Just rotting there. Next year he came again. I have a pretty girlfriend and I will marry next year. My life is good. Nothing to worry about. Next year he came once more. I will stop visiting and forget you. My life is better without you. See, I will live well. But he came again. The next year and the year after that. People say he was haunted by his so called arch enemy, that even after death, the devil did not even let him go. He stood in front of her grave. His once handsome face had turned old and wrinkled. Bai Sangyun, I cursed you. You are not allowed it to rest in peace. You must be suffering there, like me, right? You devil. He might be the last one standing, but his life was the same as the death's life is, and empty. He did not live well. He never once married, and his heart was never at peace. And it was all the fault of that one person. Okay, so this is the first half of the introduction, and the next half is Bai Sangyeon was a big bully in high school. The target of her bullying was the skinny boy in her grade, Fai Cheon. They were classmates once in a kindergarten and met again in high school. But one day, just a year left before graduation, the big bully suddenly changed. One day, Fai Cheon hesitantly opened his locker. The other night, the big bully said that she left something in his locker and he did not really want to open it. He was afraid a poisonous snake would come out of his locker. However, his report card was there with a gritting teeth. The young boy opened it. However, what appeared was not hideous thing as he expected, but a bright pink letter with a little heart sticker as a seal. It turned out the surprise was scarier than a snake. Was this now a new form of torture? Since then, Bai Sangyeon relentlessly chased the young Pai Cheon until the two got married. This is the story of rebirth. The two arch enemies who could not live under the same sky had become sweet lovers. Yeah, it is what the introduction stated. The story is about two arch enemies, like they are really arch enemies, but with time, the female lead realized that he is not basically really a enemy, but a sweet guy who can also be loved, who is lonely like her and can also be a good life partner. So up till 30 चैप्टर्स लाइक टोटल 30 चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के हैं वो बेसिकली पूरा पास बताते हैं लाइक रीबर्थ के पहले का and they just state about how both meet and how their real rivalry or we can say the real hatred begins between them एंड क्यों वो एक दूसरे को हेट करते थे कैसे एक इलिजिस्टिमेट डॉटर एक लेजिस्टिमेट डॉटर बन के आई एक
विरासत की जंग लड़ने टाइप काइंड ऑफ थिंग। ओके, मैंने बता एग्जीक्यूट कर दिया, इतना कुछ है नहीं वहाँ पे जंग लड़ने टाइप्स वाला। बट हाँ, वो कैसे अपने रीबर्थ के बाद अपने पुराने जो एनिमीज़ हैं उनके ऑलरेडी मूव पता रहते हैं उसे, एंड कैसे वो उनसे डील करती है। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट्स इज़ बेस्ट इन द स्टोरी। लाइक आई लाइक द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एवरी कैरेक्टर। मतलब उन लोगों ने विलन को तक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हेल्प की है। इसमें विलन विलन तो हीरोइन को ही दिखाया है, लाइक द विलन इज़ इक्वल टू हीरोइन। बट हमें पता है, वी ऑल नो दैट द फीमेल लीड विल नेवर बी अ विलन। सो इन दिस द रियल विलन्स ऑल्सो हैड अ कैरेक्टर डेवलपमेंट जर्नी, एंड आई लाइक दैट। एंड अंटिल 285 it hooked me with its storytelling. I like the storytelling of the author, and she is a great writer. But yeah, I can't just always say that it is a really good story, okay? And then the other thing I don't really like is कि एपिसोड्स बहुत धीरे धीरे आते हैं, लाइक डेली 2 एपिसोड्स ओके ही, बट कभी कभी बीच में गैप भी पड़ जाता है। एंड देन द अदर थिंग इज़ इट्स नॉट दैट टिपिकल स्टोरी कि कोई अमीर इंसान है एंड एक गरीब लड़की है, एंड उन लोगों की लव स्टोरी दिखा रही है कि उन लोगों ने शादी कर ली है, फोर्स मैरिज टाइप ऑफ थिंग, या फिर कोई माफिया एक लड़की से प्यार कर बैठा टाइप्स। सो इट इज़ नॉट दैट स्टोरी। इट इज़ अ यूथफुल स्टोरी, लाइक इट्स रिवॉल्व अराउंड टू यंग पीपल्स. They are mentally matured, but then also they do some childish things, like chasing our first crush type of thing. It's a sweet love story, okay. अगर किसी को थोड़ा सा टेंशन टाइप्स वाली स्टोरीज पसंद होंगी तो उन्हें शायद ये पसंद नहीं आएंगी, बिकॉज इट अ लाइट स्टोरी टाइप्स, ओके। एंड देन इसमें और क्या है, इसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी है। स्टार्टिंग में तुम लोग थोड़ा स्ट्रेस ही आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं है, बट थोड़ा धीरे धीरे करते करते उसमें एक लाइट कॉमेडी का टाका भी लगता है। एंड एक राइवलरी, देन उन लोगों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, कैसे वो एक दूसरे को हेट करते हैं, कैसे एक दूसरे का एग्जिस्टेंस भी उनको पता नहीं, बट इसलिए कि जो बाइसेंग है उसको ना फूड का टेस्ट नहीं आता, बट ड्यू टू ऑफ अ मेल लीड्स टच, लाइक उसका जो टच है वो इतना गॉडली है, उस फूड का टेस्ट आने लगता है। वो एक इमोशनल बैरियर होगा, आई थिंक सो, लाइक अकॉर्डिंग साइकोलॉजी। बट इन स्टोरीज इज जस्ट कि बाइसेंग को लगता है कि फाइचियान अगर उसके खाने को टच करेगा तो फिर उसे उसे उस खाने का टेस्ट आएगा, एंड इसी बीमारी के कारण ना बाइसेंग की पिछले जन्म में डेथ हुई थी। सो इट्स सम स्पॉयलर्स, सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट या सो दिस इज़ लाइक दिस। एंड अब एज़ कि वो पहले एनिमीज़ थे, एंड ऐसा नहीं कि दोनों को स्टार्टिंग से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, दोनों एक दूसरे को पहले हेट ही करते थे, लाइक सच्ची वाला हेट। बट दोनों एक दूसरे को इतना हेट भी नहीं करते थे कि एक दूसरे का मर्डर ही करते, लाइक रियल हेट नहीं, बट अ स्वीट हेट, सॉफ्ट हेट, ओके। अब मैं ये कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे नहीं पता, बट जो नॉर्मल रीडर्स है ना वो समझ पाएंगे कि स्वीट हेट क्या होता है, ओके। एंड वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं बट एक दूसरे को टॉलरेट भी करते हैं, मुझे जिस तरह से एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं वो थोड़ा सा फ़नी लगता है। एंड और कुछ बताने के लिए इसमें, या सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़, यहाँ पे दोनों के दोनों की जो सिचुएशन है अपने फैमिलीज़ में एक सी है। फाइचियन भी एक अनफेवर्ड चाइल्ड है अपने फैमिली का, बिकॉज वो वीक रहता है तो उसे कंट्री साइड भेज देते हैं जहाँ उसकी बाइसैंगियन से मुलाकात होती है। एंड तभी उनके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने के कारण, लाइक उनके साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो उनको एक दूसरे के लिए हेट करना, मतलब एक दूसरे के लिए हेट पैदा करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक्चुअली एक दूसरे की किसी की गलती होती नहीं है, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे को उतनी लाइक पसंद नहीं करते। और ये मोस्टली बाइसैंगियन की साइड से होता है, लाइक फाइचियन को लगता है कि वो उसे अभी भी हेट करती है, बट वो चाहता है कि उसे हेट ना करे, या फिर नहीं भी चाहता कि उसे हेट करे, बट या उसे क्लियर नहीं है कि वो सच में उसे लाइक करता है कि नहीं। बट लाइक रीबर्थ की तुम लोगों ने स्टोरी में सुना ही होगा कि वो किस तरह उसकी डेथ पे इतना रोता है वगैरह, मतलब रोता तो नहीं है लेकिन कैसे उसको टाइम के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि वो उसे नफ़रत नहीं करता था, वो उसे लाइक करता था, वो उसके बगैर
अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पा रहा है एंड उसे इवेंचुअली उसकी डेथ तक रियलाइज़ हो जाता है कि वो उसे प्यार करता था। एंड अगर नेक्स्ट जन्म में उनकी अगर किसी और सर्कमस्टांसेस के साथ मुलाकात होती तो शायद वो इस तरह नहीं होते जो बाई चर्न के दिल को जाके लगता है। लाइक या रियली मैं स्पॉइलर देते जा रही हूँ। ओके, अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। यू कैन रीड द स्टोरी, इट्स अ नाइस स्टोरी। आई फॉरगेट दिस। तुम्हें ये नॉवेल वेब नॉवल पे पढ़ने मिल जाएंगी, तुम्हें ये क्रोम पर भी मिल जाएंगे। लाइक अगर तुम सर्च करोगे स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू नॉवेल तो फिर तुम्हें क्रोम पे मिल सकती है। एंड ये वेब नॉवेल करके एक ऐप है, उसमें भी मिलती है। ओके, बाय।